Hello friends, in this video lecture, we will be discussing a very important topic in the series of inflammation. It's a little bit tricky and lengthy, but I will try to simplify and categorize it just to make it easy for you. This topic is a collection of or comprises of some facts that you have to learn. So let's continue with the topic. Our topic is chemical mediators of inflammation. Students, as we discussed, inflammation is defined as the local response of living tissues to injury due to any physical, chemical or biological agent. It is a defense mechanism towards external stimuli against that cause of injury. Coming to today's topic, chemical mediators of inflammation are the permeability factors or endogenous mediators of increased vascular permeability. Now what does it mean? It means केमिकल मीडिएटर्स यानी कि वो केमिकल्स जो मीडिएट या इनिशिएट या फिर रेगुलेट करते हैं इन्फ्लामेशन को, दैट इज ये वो परमेबिलिटी फैक्टर्स हैं, वो एंडोजीनियस फैक्टर्स हैं जो सेल के अंदर होते हैं और हमारे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. अब परमेबिलिटी इजी होगी तभी तो केमिकल सेल्स में से रिलीज होंगे और इन्फ्लामेशन करवाएंगे एट द टाइम ऑफ इंजरी. नाउ फ्रॉम वेयर डज दीज mediators are released? These mediators are released locally by cells or they are derived from inactive precursors present in the plasma. Now see this figure very carefully. You can see these cell derived mediators can be preformed. That is, they are stored in the granules or they are synthesized when they are in need. या तो ये तब produce होंगे in response to agents that stimulate the inflammation. They can stimulate the release of the another mediator and their lifespan is short. They can act on a variety of cells. One thing you should know is that liver is the major source of plasma proteins. In case of the plasma protein derived, that is, the liver is the major source of plasma proteins. The preformed mediators are histamine and serotonin. You can see that these are the preformed mediators, histamine and serotonin. These are the other one is the newly synthesized mediators. They are synthesized when they are in need, and the other one are the plasma derived proteins. The ones which are synthesized de novo are arachidonic acid metabolites, platelet activating factor, reactive oxygen species, nitrogen oxide, cytokines and chemokines. Now plasma derived proteins can be produced by the activation of the complement system. Complement system, these are those derived from complement are C3A, C5A, C3B, C5B9, and the factor 12 is the activation factor, Hegeman factor of activation, and it generally begins the coagulation cascade or the kinase system. Now in this slide I have separately mentioned cell derived mediators that I have discussed in the previous figure, and the other slide highlights the plasma derived mediators. Now coming forward, let's know about the source of these mediators, that is from where these mediators are released and what actions these mediators show. Now the cell derived mediators like histamine, the first one is histamine. Histamine is produced from mast cells, which are the most sensitive cells, as I have discussed earlier. They are the source of this histamine is the basophils, platelets and the mast cells. And now what are its actions? It shows vasodilation, means blood vessels की dilation होना, increased vascular permeability means increased endothelial permeability, and its activation. The second one is serotonin. Serotonin, which is also preformed in the granules, is released from platelets and cause the constriction of the vessels. The others are prostaglandins, leukotrienes, platelet activating factor. These are released from the mast cells and leukocytes, and they cause increased vasodilation, pain and fever, and that is the basic sign of the inflammation. As I have told that pain is the cardinal sign of the inflammation, one of the cardinal signs. It causes the adhesion of leukocytes on the endothelium and degranulation processes, etc. Coming forward is nitric oxide. Nitric oxide is basically released from endothelium, macrophages, etc. It basically causes relaxation of the vascular smooth muscles and the killing of microbes. Now we have cytokines. The source of the cytokines is macrophages, endothelial cells and the mast cells. Its basic action is on endothelial cells and it causes the hypotension. Now last one is the chemokines. It is released from leukocytes and has the basic action of leukocyte activation.
Now, basically, we have to understand about the plasma protein derived mediators just as a brief look, as they will be discussed in detail in the future slides, in the coming slides. Now, we have basically three systems: complement system, kinase system, and protease activated during coagulation. They are basically produced in the liver, and their functions will be discussed later on. Now, active mediators are produced only in response to various stimuli like microbial products. Lifespan of these mediators, these chemokines, cytokines, platelet activating factor, etc., is very short. One mediator can stimulate the release of the other, like complement activation causes release of the histamine and cytokines. Now, what are the general principles of the chemical mediators? First is mechanism of action of mediators. It expires receptor ligand interactions, यानी कि ये जो मीडिएटर्स हैं ये उन रिसेप्टर्स पर ही बाइंड करेंगे with specificity and selectivity. The action of enzyme on various cells can have direct influence on release of mediators. Presence of reactive oxygen species or oxidative damage can also cause release of the chemical mediators. Next is the network of interacting chemicals, high degree of redundancy. इसका मतलब है that ये जो chemical mediators हैं they have high degree of reliability and it also ensures the amplification of response in case of inflammation. Mediators also have short half-life and can be potentially harmful. Now, chemical mediators that cause vasodilation are histamine, nitric oxide. अब जब भी vasodilation की बात आएगी then you should remember that nitric oxide is the basic mediator that causes the vasodilation, and prostaglandins. See students, these actions you will have to learn. Chemical mediators that cause increased vascular permeability are histamine, C3A and C5A. These are formed during the complement activation pathway. Bradykinin, reactive oxygen species, platelet activating factor, and leukotrienes. Chemotaxis. Now, as we know that chemotaxis is the movement of an organism in response to a chemical stimulus. And the mediators responsible for this process are C5A, leukotriene B4, leukotriene C4, and chemokines, etc. Now, mediators responsible to show cardinal signs of fever are interleukin-1, tumor necrosis factor alpha, interleukin-6, prostaglandin. See students, don't worry, this will be discussed in detail later on. Just have a brief view for now only. For pain it's PG, and that is PG is prostaglandins and kinins. For tissue damage it is lysosomal enzymes and reactive oxygen species. Now after this, let's have a look at self-derived mediators in details. As I told you, I will explain you it in detail. Now students, vasoactive amines जो हैं ये first mediators हैं to be released during inflammation. First mediators to be released during inflammation. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये और सीरोटोनिन, that is हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो है वो प्रीफॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स में रहते हैं एंड स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं इन मास्ट सेल्स में, बेसोफिल्स में एंड प्लेटलेट्स में. सिर्फ ये दोनों. सबसे ज्यादा हिस्टामिन जो होता है वो मास्ट सेल्स में स्टोर होता है. मास्ट सेल्स हमें पता है बहुत सेंसिटिव होते हैं. जैसे ही ये किसी एक्सटर्नल पेनफुल स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आते ही एज इट इज हिस्टामिन को रिलीज कर देते हैं. सिंपल. नाउ we have also discussed that they cause increased vascular permeability. ये जो हमारे vascular connective tissues है इनकी permeability को increase कर देते हैं and it is caused due to increased blood flow and endothelial barrier disruption. ठीक है, बैरियर की डिस्ट्रप्शन होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और वेसोडाइलेशन ज्यादा होगी. सेकेंड वॉज वेसोडाइलेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड. मैंने पहले भी कहा था जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड का नियम आएगा तो यानी कि वहां पर वेसोडाइलेशन सबसे ज्यादा होगी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन. व्हील इज द एलिवेटेड एरिया. जब भी चोट लगती है वो एरिया जो है उठ जाता है एंड एट द टाइम ऑफ इंजरी और उसके आसपास क्या हो जाती है, रेडनेस. अदर इज इचिंग एंड पेन दैट रिजल्ट्स ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ अ subset of unmyelinated C fibers. Now other vasoactive amine is 5-HT. ये जो हमने लिखा हुआ है इसमें 5-hydroxytryptamine, इसका मतलब होता है सीरोटोनिन. ठीक है. It is stored in platelets and mast cells, present in chromaffin cells of GIT, spleen, nervous tissue, mast cells and platelets. Next are the neuropeptides. Now these neuropeptides are formed in the central nervous system and
Peripheral nervous system. Their main action is increased vascular permeability, transmission of pain stimuli and mast cell degranulation. ये जो हमने टर्मिनोलॉजीज हैं, डीग्रेनुलेशन हो गई, पेन स्टिमुलाई हो गई, वैस्कुलर परमिलिटी पहले ही डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स नो अबाउट एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स. व्हाट आर दे, हाउ आर दे सिंथेसाइज्ड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दीज मेटाबोलाइट्स इन द इन्फ्लेमेशन. सी स्टूडेंट्स, as we know, whenever there is tissue injury, there is injury to neutrophils, mast cells, platelets, endothelial cells, मैक्रोफेजेस. और हमें अब क्या समझना है कि जब भी कोई इंजरी होती है, देर इज इन्फ्लक्स ऑफ व्हाट, कैल्शियम इनटू द सेल्स. दिस इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम एक्टिवेट्स द एंजाइम्स. वन ऑफ इट्स इज फॉस्फोलाइपेज A2. जब भी हमारे को इंजरी होगी, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा और जो हमारी एंजाइम होगी फॉस्फोलाइपेज A2 वो एक्टिवेट हो जाएगी. अब सबको पता है जब भी एक्टिवेशन होती है फॉस्फोलाइपेज A2 की, वी नो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं. और जो एरिकिडोनिक एसिड होता है वो इन मेम्ब्रेन्स में, जो ये सेल वॉल्स होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, इसमें एस्टेरिफाइड फॉर्म में रहता है, मतलब कि एस्टर के फॉर्म में रहता है. और जब फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो जाती है, वो फ्री एरिकिडोनिक एसिड जो है, वो जो हमारा एरिकिडोनिक एसिड एस्टेरिफाइड फॉर्म में, वो फ्री एरिकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जिसे हम इकोसिनॉइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इकोसिनॉइड्स. इट इज द टर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम 20 कार्बन फैटी एसिड्स. जो इकोसिनाइड्स होते हैं वो 20 कार्बन फैटी एसिड से बनते हैं. इकोसा एक ग्रीक वर्ड है, दैट मीन्स 20. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन्स आर द इकोसिनाइड फॉर्म्स इन दिस पाथवे. नाउ इट इज एक्टिवेटेड थ्रू टू पाथवेज. वन इज द साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे and the other one is the 5-lipoxygenase pathway. अब सबसे बढ़िया तरीका है इसे इस फिगर से समझने का. Let's understand it with the help of this figure. See, this is a cell membrane of phospholipid. You can see the topmost. It is converted to free arachidonic acid by the activation of enzyme phospholipases. अब phospholipases इसमें एक्ट कर रही है और ये एरिकिडोनिक एसिड को कैसे मेटाबोलाइज कर रही है. मेटाबोलाइज यानी कि कैसे बायो ट्रांसफॉर्म कर रही है. बायो ट्रांसफॉर्म यानी कि कन्वर्ट कर रही है थ्रू टू पाथवेज. लेफ्ट साइड में साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे है, राइट साइड में 5-lipoxygenase पाथवे है. जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे है दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय COX-1 एंड COX-2. COX-1 और COX-2 आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है. COX-1 का मतलब है साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेस 2. और ये एरिकिडोनिक एसिड है दैट इज कन्वर्टेड टू प्रोस्टाग्लैंडिन G2. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी वैसोडाइलेशन कराता है. ठीक है, PGG-G2 विच इज फर्दर कन्वर्टेड टू PGH2. आप देख सकते हैं, ये आपको याद करना है. With the help of tissue specific synthesis, this PGH2 is converted to what? It is converted to PGD2, PGE2, PGF2 alpha, PGI2 and thromboxane A2. ठीक है. Now arachidonic acid through, अब right side में देखो, lipoxygenase pathway है, gets converted to 5-HPETE और इसकी full form है hydroperoxy eicosapentaenoic acid. Which further gets converted to 5-HETE, जिसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी इकोसा टेट्रानोइक एसिड, एंड ऑल्सो टू LTA4, LTB4, LTC4, D4 एंड E4 यानी कि ल्यूकोट्राइन्स. दिस 5-HPETE through 12-lipoxygenase pathway further gets converted to lipoxin A4 and lipoxin B4. अब इनकी एक्शंस क्या हैं? ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2, F2 अल्फा एंड I2 आर इन्वॉल्व इन दी व्हाट, वैसोडाइलेशन. सबको पता है वैसोडाइलेशन कराते हैं. ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जबकि थ्रोम्बोक्सिन्स जो हैं वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंड्यूस करेगा. See, these mediators can have different effect on different muscles. अब ये नहीं है कि एक मीडिएटर का इफेक्ट एक जगह वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है तो दूसरे मसल्स पे भी उसका इफेक्ट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. हर मसल पे, हर टिश्यू पे उनका डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं. Like PGF2 alpha on one side causes vasodilation and on smooth muscles it causes the bronchoconstriction. Leukotriene B4 is a chemoattractant. That means it promotes the chemotaxis. जो हमने बताया था, movement of an organism in the direction of increased concentration, while lipoxin A4 and B4 inhibits the chemotaxis.
Now, let's move forward to the lysosomal components. The inflammatory cells, neutrophils and monocytes contain lysosomal granules, which on release elaborate a variety of mediators. ना lysosomes जो हैं यानी कि जो suicidal bags हैं ये हमारे involved होते हैं in degradation of the extracellular matrix जिसमें से रिलीज होती है collagenase, hydrolase, protease मतलब जितनी भी enzymes हैं वो इसमें से रिलीज हो जाएंगी. They kill the infectious organisms and or infected cells. Now what does the granules of monocytes and tissue macrophages contain? They contain what? Proteases, collagenase, elastase, plasminogen activator. Now granules of the neutrophils contain primary, secondary and tertiary enzymes. There are some names of the enzymes that you should read and learn. Now coming forward, let's study about the platelet activating factor. These platelet activated factor are released from IgE, immunoglobulin E sensitized basophils or mast cells, leukocytes, endothelium and platelets. Now the function of platelet activating factor. Platelet activating factor, as the name suggests, is responsible for the platelet aggregation and release. When released in large amount, it causes bronchoconstriction and vasoconstriction. Vasodilation and vascular permeability when released in the low amounts. It increases leukocyte adhesion, that is adhesion of the leukocytes on the walls of the endothelium, and promotes the chemotaxis. Now it increases the leukocyte degradation and oxidative burst. Now just have a look about the cytokines. These are the polypeptide substances produced by activated lymphocytes. इसका मतलब है polypeptide substances are the substances produced by the activated lymphocytes. अब activated में क्या हो जाता है? Lymphokines उसका नेम और activated monocytes का नेम. जब वो activated फॉर्म में होंगे उसका नाम हो जाएगा monokines. Kines का मतलब ही क्योंकि movement है. Major cytokines are interleukin 1, tumor necrosis factor alpha and beta. Basically we have to study about their general properties. ठीक है. Role in inflammation, whether they are interleukins or chemokines. What actually are cytokines? You should know that what actually are cytokines. It's a combination of two Greek words. ये सब इस slide में लिखा नहीं है, मैं just verbally बोल रही हूँ, so please ध्यान से सुनना. It's a combination of two Greek words. Cyto means cells and kinos meaning movement. These are low molecular weight regulatory proteins or glycoproteins that are secreted by WBCs and various other cells in the body in response to a number of stimuli. They are secreted mainly by lymphocytes, ऊपर भी बात हुई है, macrophages, dendritic cells, etc. Also, let's know about other names of the cytokines. Listen to them very carefully. First is interleukins. अब interleukins का मतलब ही क्या है? Interlink. ठीक है. Interleukins means the interrelation between the leukocytes और interlink between the leukocytes. और वो कैसे है interlink? Interleukins are produced by one leukocyte and act on the other leukocyte. एक leukocyte दूसरे leukocyte पर act करेगा. Second name is, तभी उसका नाम क्या है? Interleukin. दो के बीच में interrelation. Second name is lymphokines produced by lymphocytes, monokines produced by monocytes, chemokines which are having chemotactic properties. And interferons involved in, और interferons जो नेम हम बोलते हैं IF, उसका नेम क्या, वो उसका क्या मतलब है? It is involved in the antiviral responses. Colony stimulating factors support the growth of the blood cells. Now what are the actions of interleukin 1, tumor necrosis factor alpha and tumor necrosis factor beta? They induce the what? They induce the endothelial effects. They increase the leukocyte and leukocyte adherence. This term I have discussed a couple of times. Thrombogenicity, that is formation of thrombus. Proliferation or replication of the fibroblast, मतलब multiplication या फिर replication. Now coming forward is interferon gamma, जो हमने बोला था अभी interferons, antiviral responses में जो involved होते हैं. They help in the activation of macrophages and neutrophils. The other one is synthesis of nitric acid synthase. Now let's come to very important class of cytokines, that is chemokines, that are involved in the chemoattractant properties. Please listen to it very carefully. Chemokines are basically produced from macrophage cells
and endothelial cells. These are a family of small 8 to 10 kilodalton proteins. That is, the unit of their molecular weight is daltons. You should just learn this thing, that they act as chemoattractant for the leukocytes. और ये जो है सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स को कहाँ पर डायरेक्ट करते हैं? टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी, टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, जहाँ पे इन्फ्लामेशन करानी है. वेरियस टाइप ऑफ कीमोकाइंस होते हैं. सी कीमोकाइंस, CXC कीमोकाइंस, C कीमोकाइंस, CX3C कीमोकाइंस. और ये X जो है ये होता है अमीनो एसिड. About 40 different chemokines and 20 different receptors for chemokines have been identified till now. Now, what are the basic functions of the chemokines? In acute inflammation, they stimulate the leukocyte attachment to endothelium by acting on leukocytes to increase the affinity of integrins. और ये integrins क्या होते हैं? ये integrins हमने इंजरी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. These integrins are the specific proteins that या फिर थे जो ल्यूकोसाइट्स को एंडोथेलियम की ल्यूकोसाइट्स की एंडोथेलियम के साथ बाइंडिंग करवाते हैं. कीमोटैक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ सेल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन. अदर वन इज द मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर. नाउ इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 17 एंड टाइप 1 इंटरफेरॉन्स. द सोर्सेज ऑफ इंटरल्यूकिन 6 इज मैक्रोफेजेस, फिब्रोब्लास्ट, endothelial cells and few epithelial cells. Interleukin 17 is produced by T lymphocytes. They promote the neutrophil recruitment at the time of inflammation. Now next is, what is the role of cytokines in the inflammation? Now the first function is endothelial activation and वो कौन करता है? That is done by the tumor necrosis factor and interleukin 1. ये जो tumor necrosis factor and जो interleukin 1 है, they increase the expression of adhesion molecules. ये adhering proteins और molecules है कौन से? ये हैं P and E selectins, ठीक है, and ligands for the leukocytes. They cause the increased production of various mediators, increased procoagulant activity. Now next is activation of leukocytes and other cells. Cytokines जो हैं, they will promote the microbicidal activity of macrophages by inducing the production of nitrogen oxide. जो interleukin 1 है, that will activate the fibroblast to synthesize the collagen and stimulate the proliferation of synovial and other mesenchymal cells. अब cytokines जो हैं, they will also stimulate the Th17 responses and induce the acute inflammation. Now what does the master cytokines? Master cytokines कौन से हैं हमारे पास? Interleukin 1 and tumor necrosis factor. Now what they will do? Let's understand it with the help of a flow chart. See, when macrophages come in contact with the microbial products, cytokines, toxins, etc., they will lead to the activation of the macrophages. You can see it in the figure. Now these macrophages will release tumor necrosis factor and interleukin 1. Now both of these tumor necrosis factor and interleukin 1 will have either local effects or systemic effects. अब ये जो tumor necrosis factor है और जो interleukin 1 है, कि कौन से local effects हैं, मतलब कहाँ पर वो सिर्फ उसी जगह काम करेंगे जहाँ पर इंजरी हुई है, और systemic effect जो होता है वो पूरी बॉडी पर होता है. The word systemic is related to blood and blood circulation में पता है पूरी बॉडी में होती है. Local effects are found on the vascular endothelium, leukocytes and fibroblast. अब vascular endothelium पर क्या इफेक्ट होंगे? There will be increased expression of leukocyte, ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, increased expression of leukocyte और adhesion molecules, production of interleukin 1 and chemokines. Procoagulant activity will increased. Procoagulant activity increase हुआ तो obviously anticoagulant activity will decrease. जो रिजल्ट होगा inflammation. Now next local effect जो होंगे ल्यूकोसाइट्स पर, जो कि होगा ल्यूकोसाइट्स के एक्टिवेशन से एंड प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस से. लास्ट लोकल इफेक्ट होगा ऑन फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन एंड इंक्रीज्ड कोलेजन सिंथेसिस. सिस्टमिक इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, एक्यूट फेज प्रोटीन्स, डिक्रीज इन द एपेटाइट एंड इंक्रीज इन द स्लीप. Coming forward, let's understand some points about free radicals, that is oxygen metabolites and nitric oxide. In this context, first is oxygen derived metabolites. As you can see, oxygen derived metabolites are released from activated neutrophils and macrophages. अब इन oxygen free radicals के action क्या है? ठीक है, they lead to damage of endothelial cells and lead to increased vascular permeability.
एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज होती है दैट विल गेट एक्टिवेटेड एंड ऑब्वियसली प्रोटीएज एक्टिवेट होगी तो एंटी प्रोटीएज विल गेट डीएक्टिवेटेड causing the tissue matrix damage. Now second is nitric oxide. Nitric oxide is synthesized from L-arginine by NOS. ठीक है, synthesized from L-arginine. L-arginine क्या है, हमारा अमाइनो एसिड होता है. L-arginine जो है अमाइनो एसिड है. They are formed by the activated macrophages. Their actions are relaxation of smooth muscles. बार बार मैंने ये बात बोली है, ये स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन कराता है, वेसोडाइलेशन कराता है, रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड एडिशन. इट ऑल्सो एक्सेस बैक्टीरिसिडल, दैट इज इट किल्स ऑल दी बैक्टीरिया. इट ऑल्सो एक्सेस एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एजेंट. इट हेल्प्स इन वेसोडाइलेशन. अनकंट्रोल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कैन कॉज वेसोडाइलेशन शॉक. नाउ सो फर्स्ट पार्ट we covered was cell derived mediators. Now secondly we have plasma derived mediators. These plasma derived mediators are the various products derived from activation and interaction of four interlinked systems: kinase system, clotting system, fibrinolytic system and complement system. Now there is a hegemon factor, factor 12 of clotting system that plays, अब ये जो हम factor 12 लिखेंगे हमेशा रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे, a floating system that plays a key role in the interaction of four system. But the point is that how factor 12 is activated in vivo, यानी कि बॉडी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये एक्टिवेट होता है वो एक्टिवेट कैसे होता है, और इन विट्रो यानी कि अगर हम वही जो ह्यूमन बॉडी का जो एनवायरमेंट है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो जितनी भी ऑप्टिमम कंडीशंस है, हम उसको किसी ऐसी जगह पर मतलब ऐसी जगह पर क्या है साइमुलेट करेंगे, उसे बोलते हैं इन विट्रो. इट गेट्स एक्टिवेटेड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन इन वीवो में, बॉडी के अंदर, एंड बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स के जब ये कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, दैट इज जो टॉक्सिन. बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स क्या है, दैट इज जो वो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आकर रिलीज कर देता है. एंड अगर यही एक्सपेरिमेंट हम इन विट्रो कर रहे हैं दैट इट गेट्स एक्टिवेटेड विद ग्लास और क्योलिन. ठीक है, लास्टली द एंड प्रोडक्ट दैट इज जब ये सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि क्लॉटिंग, फिब्रोनोलाइटिक एंड काइनेस सिस्टम है, ये एक्टिवेट करेंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ऑल द फोर सिस्टम. वी विल स्टडी अबाउट द एक्टिवेशन पाथवेज. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स. अब जैसे पहले भी बात हुई थी दैट जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसके जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन लीवर. It comes to effect when it is activated. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कब होगा एक्टिवेट, जब हमारी ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है सब डिराइव हो जाते हैं. These are widely distributed among the body tissues and fluids. Out of 20 proteins, only 11 are mostly what involved. Now let's see how complement system is activated. Just have a look over this picture. Now firstly it is activated by antigen antibody reaction. It is also called the classical pathway. नीचे जो पाथवे दिया क्लासिकल पाथवे. एंटीजन क्या है, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर होता है फ्रॉम आउटसाइड, दैट कैन बी एनी बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा. एंटीबॉडी जो है, अब एंटीबॉडी एंटीजन की बात हुई है तो एंटीजन मैंने बता दिया आपको कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, और एंटीबॉडी क्या होती है, ये वो बॉडीज होती हैं जो उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या है सिंथेसाइज करती है. कोई मतलब जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाने लगता है टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट एंटीजन. नाउ सेकंड इज द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन पाथवे एंड थर्ड वन इज द लेक्टिन पाथवे दैट रिजल्ट्स इन मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन. इट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. द C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो है वो स्प्लिट करती है C3 into C3A and C3B. जैसे कि आप देख सकते हैं C3A C3B में कन्वर्ट कर दिया. Now you can see in this figure that C3B is the bigger product and C3A is the what smaller product. ठीक है, now C3A has functions like inflammation and C3B has functions like phagocytosis and lysis of microbes and degranulation of the mast cells. ये जो इतनी सारी फिगर है इसमें सिर्फ यही बता रखा है कि C3A इन्फ्लामेशन कॉज करती है जिसमें ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन, एडिशन, कीमोटैक्सिस है. C3B में फैगोसाइटोसिस हो गया है. ठीक है, देन मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो लाइसिस ऑफ माइक्रोब करा रहा है, और मास्ट सेल में क्या हो रही है डीग्रेनुलेशन और वैस्कुलर इफेक्ट्स हो रहे हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल्टरनेटिव पाथवे. इट इज ट्रिगर्ड बाय बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स. अब ये बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन जो है इट इज लाइपोपॉलीसेकेराइड दैट इज फाउंड इन द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया.
Other trigger factors are yeast cell wall and cobra venom factor. Now, what we should know about the lectin pathway or lectin mannose pathway is that there is a protein called mannose binding lectin which is synthesized in the liver. और जो organisms होते हैं like नाइसीरिया, कैंडिडा, सैल्मोनेला, ये एंटर होते हैं बॉडी में, जिन उनके ऊपर भी क्या होता है, ग्लूकोज और मैनोस की क्या होती हैं, ग्लूकोज और मैनोस के रेसिड्यूज लगे होते हैं. और जब ये हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, जो मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन होता है इन रेसिड्यूज को क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है. ठीक है, और उनके साथ क्या करवा लेता है, बाइंडिंग करवा लेता है, और जिसकी वजह से जो हमारा C1 है जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. Now let's study about the other pathways. These pathways consist of number of proteins or factors. Factor 12, factor 11, factor 8, factor 9, ये जो है ये factors की नेम है, हमेशा रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखे होंगे. These pathways consist of number of proteins or factors, और जो first factor होता है Hagman factor, यानी कि factor 12. बार बार मैं बोल रही हूँ factor 12 से ही सब कुछ इनिशिएट होगा. This factor is converted to factor 12A. आप देख सकते हैं फैक्टर 12A में कन्वर्ट होता है, और इसकी एक्टिव फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से. 12A इसलिए है और A का मतलब है एक्टिवेटेड. फैक्टर 12A कन्वर्ट्स फैक्टर 11 इंटू फैक्टर 11A. 11A कन्वर्ट्स फैक्टर 9 इंटू फैक्टर 9A. Then 9A then converts factor 10 into factor 10A with the help of factor 8A. Here in this clotting cascade, जो आप राइट साइड में क्लॉटिंग कास्केड देख रहे हो, जो इंटरमीडिएट फॉर्म्स है वो इसमें मेंशन नहीं है फिगर में, दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू वर्बली. दिस 10A फैक्टर लीड्स टू द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन टू फिब्रिन एंड फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, तभी क्लॉटिंग होती है. नाउ लेट्स लुक एट द एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो ये काइनिन कास्केड साइड में दिया हुआ है. ये स्टार्ट होता है जब प्रोटीन जो कि टिश्यू फैक्टर है वो रिलीज होता है फ्रॉम द डैमेज टिश्यू. Factor 12 also activates the kinin cascade. Factor 12 converts pre-kallikrein to kallikrein, and then this activated kallikrein leads to the formation of high molecular weight kallikrein that ultimately leads to the formation of the bradykinin. It ultimately, that is kallikrein, leads to the activation of fibrinolytic system in which plasminogen is converted to plasmin that activates the complement cascade. We discussed it as we discussed it earlier. So ये जो पूरा कास्केड है इसमें आपको फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर किसको एक्टिवेट करेगा, इसे अच्छे से याद करना है. Now let's come to the function of these complements. So now after studying these cascades in detail, let's know about their functions. So functions of complements are as follows. It causes inflammation, that is obvious. So basically histamine will be released. These are called the anaphylotoxins, जो ये C3, C5A and C4 हैं. ठीक है. C5A जो है कॉम्प्लीमेंट इज कीमोटैक्टिक, दैट इज इट कॉजेज द कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स. ये इनकी क्या करवाएगा, रिक्रूटमेंट कराएगा एंडोथेलियल मेम्ब्रेन्स पे, और उनको क्या करवाएगा, आगे की तरफ जहां पे इन्फ्लेमेशन है वहां पे उसको फोर्स आउट करेगा. Next is opsonization, that is coating of microbes with proteins called opsonins, and phagocytosis is promoted by C3b and IC3b. Lysis of cells, deposition of membrane attack complex on, ये जो MAC है that is membrane attack complex, जब हमारे cells के ऊपर होगा then it will make the cells permeable to water and ions. ठीक है, permeability increase होगी तो obviously cells की death हो जाएगी. So this was all about the chemical mediators of inflammation. Students, I hope just you will find this video very useful. Thank you.